देखो भाई 2000 है ना। हेलो, हाउ मच इज ओमेगा? 2000 है, दिस वन ना, ओमेगा टी। बट आपको पूछा है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कैन आई से ओमेगा इज 2 पाई एफ, दैट विल बिकम 2000। व्हाट इज एफ? 1000 by pi hertz. Clear? Clear, simple. You all answer out, please. Mehak, what is this answer? Frequency of AC mains in India, how many hertz? 50. 50 hertz. We'll come to the sixth question. देखिए, ये बैठ के सॉल्व कर देना, 4 ऑप्शंस पूरे सॉल्व कर देना। 220 वोल्ट। अच्छा, जब भी ऐसे दिया है ना बेटा आपको, ये आरएमएस वैल्यू होगा। बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट पीक वैल्यू, इट इज आरएमएस वैल्यू। ये क्या है? 50 हर्ट्ज मतलब क्या? Frequency is applied across a resistor. The instantaneous value of voltage. You know, across voltage, yesterday we had derived as E naught sine omega t. Across a resistor, I is I naught sine omega t is E naught sine omega t. So what is E naught? E naught मालूम नहीं, E naught is the peak value. What is the formula in terms of RMS value? E RMS is E naught by root 2. So what is E naught? E RMS root 2 sine omega t. Can I write this as become E RMS into root 2? Sin omega को लिख सकते हैं 2 pi f t. What is E RMS given as? 220 root 2 sin 2 pi f. F कितना? 50. 50 2 is 100. 100 pi t. Done, sir. Okay, simple questions. Yes, this is the resultant answer. अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। The peak value of alternating current is 5 ampere. Peak value of the current होता है I naught. I naught is given as 5 ampere. Frequency is given as 60 hertz. Find the RMS value and the time taken to reaching the peak value from 0 to peak. इधर ध्यान दो. Can anyone tell me what is IRMS का formula? I naught by root 2. Perfect. I naught by root 2 will become 5 by root 2. That is 3.5 something. ये तो easy है. अच्छा, दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि time taken to reach peak value from 0. अच्छा, we know it is a sine wave. ये 0 है, ये t है, तो आपको मालूम है ये t/2 है, तो ये कितना टाइम रहेगा? t/4. कैन आई से 0 से पीक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? t/4. अरे ऑसिलेशन में भी तो वही टाइम लगता था 0 से 90 तक, t/4. सो दिस इज t/4. but t I don't know, I know f, so can I write t 1/f4? So it will become 1 by f कितना है? 60 into 4, that is 1/240 seconds. 1/240 seconds is approximately 4 point something milliseconds. बराबर है क्या? हेलो, ये आ गया ना आंसर? नहीं, कितना आ गया? ये तो क्या है? 8 ए है, ये थोड़ी हो सकता है। 35.3 एम्पियर कैसे आएगा? ये मिली सेकेंड तो ये सही है, आई थिंक सो। ये 3.3 होना चाहिए, पॉइंट में मिस्टेक है। गेटिंग इट है ना? हेलो, गॉट इट ना? सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10. I am not asked, I am not doing, you all will tell me. There they go. Alternating current equation is given. I is 20 sine 100 pi t plus
0.05 pi. Can I compare this with I is I naught sine omega t plus delta? The RMS value of the current. Mehak, what is I naught? IRMS by root IRMS is I naught Two by root. root 2 into root. into 2. हाँ, तो IRMS क्या हो जाएगा? I naught by root 2. What is I naught given in the question as 20 by root? Getting it? That is 10 root 2. ये तो मिल गया. And the frequency. Can you tell me how much is omega? 2 pi r. 100 pi over here. Hertz. So it will become 10 root 250 hertz. Did you understand? Simple. Perfect. Perfect. Please. Rishi Balse, checkpoint 7.2. Ohm's law expressed as E is equal to IR can never be applied to AC. Applied to AC in the same manner as that of DC. Always applies to AC circuits when Z is substituted as R. Tells that E net is 0.707, E maximum for AC. क्या बोलो? क्या बोलते हो आप? बोलो. सी. सबसे करेक्ट सी है ना? यस सर. सबसे करेक्ट सी है. इधर याद है ना हम लोग अप्लाई करते थे E was I into R नहीं, E was I into Z, where Z was called as impedance of the circuit. Yes sir. Fine. Who's going to answer? Okay. Here beta. Yes, sir. An alternating current of RMS value. What is this? IRMS is given as 10 ampere. Is passing through a resistor of 12 ohms. The maximum potential difference. मतलब E naught मांगता है. Maximum value. एक काम करते हैं. What is ERMS का formula? IRMS into R ना बेटा. Resistor है ना. IRMS कितना है? 10 है. R कितना है? 12 है. तो ये हो जाएगा 120 वोल्ट. बट आपको ERMS नहीं चाहिए, आपको E नॉट चाहिए. कैसे निकालने का? into root 2. Yes or no? This will be the answer. Bolo. Hello. Yes, sir. Okay. Next question. Look carefully. The capacity of a pure capacitance is 1 farad. C का value was given as 1 farad. In DC circuit, DC में frequency कितनी होती है? The effective resistance. What is the resistance in C? XC, which is 1 upon 2 pi FC. Can I say F is 0? So XC will be infinity. Did you get it? DC का frequency 0 होता है. Frequency अगर 0 होता है तो XC will become equal to infinity. That means it will act like an good circuit. Open circuit. It will act like an open circuit. Okay. Next question. In an AC circuit containing only capacitor, Valse, capacitor में who leads and who lags? Current leads. The voltage by how many degree? 5/2. 90 degree. ठीक है ना? Done. Next question. A capacitor is a perfect insulator. Perfect insulator मतलब open circuit. Insulator मतलब
ओपन सर्किट फॉर, अभी सिखाया मैंने, अभी सिखाया। एक्सी इंफिनिटी कब हो जाएगा? फॉर विच सर्किट्स? डीसी, बिकॉज डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0 होता है। एक्सी का फॉर्मूला क्या है? F0 XC becomes equal to infinity. Infinity मतलब it will become like an open circuit, DC, direct current. Getting it? सब important sums है भाई. Hello. Next one. You're doing? Okay, this is good question. Question number 7. In an AC circuit, alternating EMF is given as E is 200 root 2 sine 100t. Is connected across a capacitor of capacity 1 microfarad. The RMS value of the current. Look carefully over here now. Can I say ERMS across a capacitor is IRMS into XC? RZ नहीं है, C है ना, तो XC आएगा. Can Mehak tell me, beta, what is ERMS in the question? What is E not given in the question? 200. So what will be ERMS, beta? बराबर है क्या? By root. ERMS मिल गया 200. IRMS आपको चाहिए. XC कैसे निकालेंगे? What is the XC का फॉर्मूला? 1 1 upon upon omega c. perfect 1 upon omega c. Where is omega obtained from? From here, can you obtain omega? Tell me fast. 100. 100. Can I write this as 200? Is IRMS. C कितना है? 1 माइक्रो. माइक्रो मतलब -6. हेलो, तो कितना हो गया IRMS? कितना होता है ये? 2 into 10⁻². That is 20 milliampere. बोलो. नीट के इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, टिपिकल टाइप. आना चाहिए यहाँ पे, इसमें कोई वो ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11. सिट एंड सॉल्व दिस टुडे. आराम से चेक पॉइंट सब खत्म कर देना. अच्छा, व्हाट इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? हेनरी. हेनरी हेनरी है नहीं यहाँ पे. अच्छा, ये फॉर्मूला सुना है आप लोगों ने? E is equal to L di/dt. तो L क्या हो जाएगा? Can I see E is in volt, time is in second, and current is in ampere. तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर बराबर क्या? These all typical नीट लेवल क्वेश्चंस, इजी वाले, डायरेक्टली देखकर टिक मार्क कर सकते हो. आपको वो टाइम स्ट्राइक होना चाहिए. ठीक है. Perfect. Question number 11. An inductive coil of resistance 100 ohms. Inductive coil of resistance मतलब XL दिया है. Frequency 1000 hertz is applied to coil. The voltage leads the current by 45 degree. Voltage leads the current by 45 degree. The inductance of the coil. Perfect. Can you tell me, you know those two formulas, right? Cos phi is what, sir? R by Z. And tan phi क्या रहेगा? XL minus XC by R. Do you agree with me? हेलो. Yes, sir. तो दोनों चीज आपको आना चाहिए, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा. An inductive coil of resistance, sorry, resistance आपको चाहिए. Resistance दिया. I'm very sorry, resistance is 100 ohm है. मतलब एक coil है, उसके पास L भी है और R भी है. तो इसका R is 100 ohms. I'm very sorry.
अच्छा, can I use this formula tan phi is XL minus XC by R, but since in the question they have not mentioned about XC, I am neglecting XC. है ही नहीं ना कैपेसिटर, तो XL ही तो है, कॉइल है ना. अच्छा, what is 45 tan 45 हो जाएगा ये, तो tan 45 1 होता है, means indirectly XL is R, that means XL is 100, but XL का फॉर्मूला मालूम है 2 pi FL, तो 2 pi F कितना है 1000 और ये 100, तो ये 0 0, ये 00 कैंसिल हो गया, तो 1/20 पाई आएगा हेनरी. बोलो यस और नो. Yes, sir. फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप नहीं काम कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर, अच्छा महक, these two L's are in series or parallel? Parallel. They behave like resistors, मालूम है ना. What will be the Yes, sir. resultant relation? नहीं, आपको आपको सॉरी L के बारे में नहीं पूछा, आपको पूछा है assuming and they have asked you the ratio of I2 to I1 at any instant of time. अच्छा, you know this formula, E is I into XL, ये सुना है क्या? तो I will be E by XL. What is constant in both of them? E ना, पैरेलल में ना बेटा, वोल्टेज सेम होगा. Yes, sir. So can I say current is inverse to XL, but XL is proportional to L because it is 2 pi FL. हेलो बोलो. Can I say I1 upon I2 क्या हो जाएगा? L2 by L1. Getting it? ये तो easy है. It was like resistors only. अगर रेसिस्टर होता तो R2 by R1 आता, इधर L2 by L1 है. बोलो. अरे यार, don't do like this, please. As you don't get marks, you go into depression. I don't get answers, I will go into depression. Come on. अरे बाल से बोलो, सही है क्या? Yes, sir. फिर कुछ आंसर दिया करो भाई. क्वेश्चन नंबर, चलो कौन बताएगा? An inductor or resistor is connected in series. अच्छा, ऋषि बाल से, इंडक्टर में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? इंडक्टर में Voltage lead. वोल्टेज लीड्स, मतलब वोल्टेज आगे होना चाहिए, करंट पीछे होना चाहिए. प्योर इंडक्टर रहेगा तो क्या होगा? तो कितना डिग्री आएगा? 90 degree. 90. मगर क्या ये प्योर इंडक्टर है? No. नो. इंडक्टर एंड रेजिस्टर दोनों साथ में है ना. हेलो, मतलब ये लीड तो करेगा, बट दिस आंसर विल बी लेस देन 90. बोलो. ए भाई, हेलो. Yes, sir. So can I say current and potential difference across the resistor? Current and potential difference across the resistance leads the potential difference across the inductor by 90 degree. Current and potential difference across the resistor lag the potential difference by 90 degree. Current and potential difference across the resistor. हाँ ठीक है, easy है. देखो क्या करने का, ये नेट की बात है, ये नेट की बात है. नेट सर्किट जो रहेगा वो ऐसे रहेगा, बट इधर है ना इंडिविजुअली एल और रेजिस्टर की बात हो रही है. ये आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इधर क्या होता है, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 एंड यहाँ पर करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज. डू यू एग्री विथ मी? हेलो. Yes. तो रेजिस्टर और इंडक्टर के स्पेसिफिकेशंस में क्या आंसर है इसको मिलाकर? अर्पिता,
The current and potential difference across the resistance lead the potential difference across the inductor by 90 degree. ऐसे है क्या? कि lag है. The current and potential difference across the resistor. देखो ये current and potential difference across the resistor. Lag behind. ये lag behind है ना? अरे भाई ये पूरा Yes. मिलाकर अगर मैं सर्किट बनाऊं तो ये I बना, ये ER बना, ये तो EL बना कि नहीं बना? Yes. ये दोनों पीछे है और ये आगे है by how many degree? 90 degree. 90. This was done initially in the circuitry also. Oh, we will not answer. 18 question. Please be with me. Please be with me. Yeah. An AC voltage is applied across the resistor. An AC voltage is applied across the resistor and inductor in sense. If A and the inductive resistance both are equal to 3 ohms, the phase difference between the applied voltage and the circuit is how much? ये क्या बोल रहा है कि पहले L और R लगाया सर्किट में voltage, and they are telling you if R an inductive reactance, मतलब R is equal to XL, and both are equal to how many ohms? 3 ohms. Mehak, tell me the formula for tan phi. थोड़ी देर पहले सिखाया था अभी tan phi, A minus XC by R. but XC तो है नहीं तो बात Yes. नहीं करना. XL and R are the same, मतलब ये भी 3 ohms है, ये भी 3 ohms है, तो already tan phi equal to 1. तो phi will be equal to how many degree? 40. 45 मतलब pi by 4. Done sir, done sir, done. And who leads and who lags? ऋषि बाल से who will lead and lag? जल्दी बोलो. LR circuit है. LR circuit में Voltage lead. the current by pi by 4. सही है, नेट का है. क्लियर है? ये बार बार आप है ना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा. Nothing else. Okay. Question number 19. Look carefully. In an LR circuit, the value of L is 0.4 by pi. R is 30 ohms in a circuit and alternating EMF of ERMS, default से ERMS बोलते हैं. Frequency is 50 cycles per second. The impedance of the circuit. अर्पिता Z का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या? Under root Under root R square plus XL minus XC the whole. you should be knowing this thing. And the current will be, मतलब indirectly क्या निकालने का? IRMS निकालने का. बराबर है क्या? Look carefully over here. अच्छा, Z में 3 कंपोनेंट्स की जरूरत है. एक R, एक XL. महक XL कहां से मिलेगा? XL का फॉर्मूला क्या है? 2 pi F. F is how much? 50. और L is given as 0.4 by pi. ये 100 into 0.4 बराबर है कितना बना? 40 ohms. अच्छा, XC है क्या सर्किट में? XC is not there because LR सर्किट है ना. तो only Z का वैल्यू 30 square plus 40 square only the result 50 ohms. So 50 ohms तो एक ही है ना. अरे देखो ना. अच्छा, IRMS पूछा. Which formula to apply in IRMS? Can I say ERMS is IRMS into Z? ERMS is 200. IRMS मालूम नहीं है. Z कितना है? 50 है. तो 4 एम्पियर. टिपिकल नीट लेवल क्वेश्चंस. एकदम आसान है. फॉर्मूला याद करो, आंसर आएगा. Got it now? Okay. Siddhi Gupta, where are you?
नो वीडियो आंसर। मैं सब लोगों से सेम सेम पूछूं बार बार तो इट इज नॉट प्रॉपर ना। नाउ यू आंसर। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 20 सुनो। द इंस्टेंटेनियस करंट and voltage. The instantaneous values of the current and the voltage are given by this 6 sin omega t plus pi by 4, 5 sin omega t minus pi by 4। तो बता सकता है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? अच्छा आपने ऑसिलेशंस पढ़ा है बेटा? सब लोगों ने पढ़ा है। हेलो, इसको बोलते हैं फेज ऑफ दिस फंक्शन एंड इसको बोलते हैं फेज ऑफ दिस फंक्शन, बराबर है क्या? अरे साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट, उसको बोलते हैं फेज, फेज एंगल बोलते हैं ना। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फेज डिफरेंस? So it will become 100 pi t pelo वालो plus pi by 4 minus 100 pi t minus pi by 4, बराबर क्या? ये तो 100 pi t कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया? pi by 4 minus of minus pi by 4 is plus pi by 4 will become pi by 2। yes or no? हेलो, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 90 का। 90 90 90 90 90। एक मिनट आंसर, रुक जाओ। दो आंसर है 90 वाले। अच्छा लुक एट द मेन डायग्राम सिद्धि, लुक एट द मेन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की तरफ देखो और इसकी तरफ देखो। इसमें मुझे बताओ करंट लीड कर रहा है कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से? ये करंट का आर्ग्यूमेंट है, ये वोल्टेज का आर्ग्यूमेंट है। कौन लीड कर रहा है? यस, हु इज लीडिंग, करंट और वोल्टेज? करंट इज लीडिंग बिकॉज प्लस पाई बाय 4 है ना बेटा, और वो माइनस पाई बाय 4 है। तो कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। हाउ मेनी डिग्री में? कितना फेज डिफरेंस आया मेरे को? 90 90 90। देखो ना, ये पाई बाय 4 आगे है, ये पाई बाय 4 पीछे है। तो अगर रेफरेंस लाइन लेंगे हम लोग, कैन आई से, अगर ये रेफरेंस लाइन है तो ये पाई बाय 4 आगे है और कैन आई से ये पाई बाय 4 पीछे है, तो इनडायरेक्टली कैन आई से दिस बिकम 90 ओनली ना बेटा। हेलो ऋषि बाल से, अगेन योर टर्न। बाल से, Yes. अब ये कौन सा सर्किट बन गया? करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90। Capacitor. हाँ, ये बन गया प्योर कैपेसिटिव सर्किट, मतलब एक ही कैपेसिटर एंड करंट लीड्स द वोल्टेज बाय हाउ मेनी डिग्री? 90 डिग्री। डिड यू गेट इट? एकदम आसान है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 21। In an LCR series circuit, the voltage across L, R and C are, the voltage across R is given as 10 volt, voltage across L is given as 10 volt, voltage across C is given as 20 volt. Does Mehak know the formula of E net beta? Root of ER square plus EL minus EC the whole square. Done. ER कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC कितना रहेगा? 10 ही रहेगा ना डिफरेंस। Yes, sir. What is 10 square plus 10 square? 10 root 2। Yes. ये हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन आता है या आता ही नहीं है, बट जब आता है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। ये ना पूरा सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24। द वैल्यूज ऑफ करंट एट रेजोनेंस इज अफेक्टेड बाय, अच्छा एट रेजोनेंस क्या क्या होता है? एट एफआर क्या क्या होता है? एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सई, ईएल बिकम्स इक्वल टू ईसी, ई नेट बिकम्स इक्वल टू ईआर। याद आ रहा है? ई आर विल बिकम, सॉरी ई विल बिकम
ERMS was IRMS into Z नहीं होगा, R होगा, because Z becomes equal to R ना बेटा. Are you there with me? Yes, sir. So can I say at resonance circuit current is affected by, so current is affected by which formula only? Only R ना, because R पे depend कर रहा है, Z पे depend नहीं करता है. Getting it? अरे what was IRMS का formula? ERMS by Z ना, but Z की जगह resonance पे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा. So can I say I is only affected by R ना, not affected by Z ना? Please understand. Okay. Mansi, Yes, sir. video on करो. Okay, Mansi, you answer. LCR series circuit is connected at resonance. What becomes equal to what? अभी फिर से हमने पढ़ा था. FR पे क्या क्या होता है? बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या सेम हो जाता है? जल्दी जल्दी बोलो. कम ऑन. हेलो. You don't know. At FR, XL becomes equal to XC. Z becomes equal to R. EL becomes equal to EC. ENet will become equal to ER. ER. ERMS is IRMS into R नहीं, Z. Sorry, R. बराबर क्या? Can I say cos phi is R by Z? Yes. But R and Z same है. So that means cos phi becomes equal to. 1. So what will be phi equal to? बराबर क्या? Cos 0 is 1 ना बेटा. Perfect. Perfect. Listen to me. Twenty-sixth. A series LCR circuit is operated at resonance. Resonance पे क्या होता है फिर से? Come on. XL becomes XC. Z becomes R. बराबर? IRMS is ERMS by R. R. Can I say Z is becoming minimum? याद है इसका ग्राफ Z का ऐसे था. तो करंट if Z is becoming minimum, actually ये तो Z था ना पहले. So R becomes minimum. That means current becomes. maximum. The impedance is becoming minimum, और current is becoming maximum. तो यहाँ पर तो impedance दिया हुआ. Got it ना? Resonance के ऊपर भी सवाल अच्छे खासे आते हैं. Please pay attention. Okay. And keep your synopsis in front of you ताकि आपको आंसर आ जाए. Okay. Synopsis जो लिखा है उसको सामने रखना. You need to turn 1-2 pages. You get the formula. You get the answer. ये इतना easy बना के दिया है. तो भी. We come to question number 29. Mehak. In an LCR series circuit connected across resonance, what happens? Hello? Can I say E net becomes equal to what? ER Yes. at resonance. So can I say the voltage across R is equal to the applied voltage? Applied Yes. voltage is E net ना बेटा. RLC circuit होता है. ये E applied है. इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाती है. ये EL और EC है ना.
बट रेजोनेंस पे क्या होता है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाता है, यस और नो? Yes. ओके फाइन, डन। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज कॉल्ड एज एडमिटेंस, ये याद रख लेना एज अ फैक्ट है, ठीक है। 1/z is called as y, admittance. Okay. जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा को बोलते हैं कंडक्टेंस ना बेटा, वैसे एडमिटेंस। चेक पॉइंट 7.3 पर आता है, ये डूइंग 7.3 एंड 7.4 एंड फिनिश्ड फ्राइडे मंडे मंडे, ठीक है, ये टारगेट होना चाहिए, वरना यार पूरा वीक निकल जाएगा, खत्म ही होगा। गेटिंग इट नॉट? तो प्लीज कोऑपरेट। हाँ 1 आवर ओनली, 1 आवर ओनली, ओके। 1 आवर में बहुत सारा काम मैं कर देता, ठीक है, गेटिंग ना? एक रिक्वेस्ट है कि सिनॉप्सिस सामने रखो यार, सिनॉप्सिस सामने रखेगी तो बहुत सारा 99% ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। एक दो फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, फ्राइडे को आपका मुस्तफा सर नहीं है फिर से, ओके, आई विल ओनली बी टेकिंग 1 आवर का लेक्चर, बराबर है ना? बिकॉज आई थिंक देयर इज सम फेस्टिवल गोइंग ऑन, तो उसकी वजह से 1 आवर बेटा, इफ यू ऑल टेल मी हॉलीडे देन आई विल गिव यू हॉलीडे ऑन फ्राइडे, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप 1 आवर आ सकते हो, सिर्फ 1 आवर, देन 1 आवर के लिए तो यार ऐसे ही निकल जाता है ना टाइम, तो 1 आवर में व्हाट्सएप देखते देखते 1 आवर निकल जाएगा, ऐसे चल लेक्चर बैठ जाओ, ठीक है। मुस्तफा सर आई हैव नॉट केप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट, चेक पॉइंट 7.3, इलेक्ट्रिकल हीटर रेटेड, ये वोल्टेज रेटिंग है उसका, ये पावर है, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? अर्पिता, पावर का स्कूल में फॉर्मूला हम लोग पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू अक्रॉस अ रेजिस्टर V into I। पावर रेटिंग कितना है? 220। वोल्टेज रेटिंग नहीं, पावर रेटिंग 550 है, सॉरी 550 वॉट है ना बेटा। 220 तो करंट मिल जाएगा यहाँ से, करंट कितना रहेगा आपको, बी आंसर आएगा 2.5 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। दिस वाज इन डीसी है, चलो ठीक है, ये रेजिस्टर के केस में। ओके, व्हाट इज एवरेज पावर इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट? ऋषिपाल से, एलसीआर सर्किट अगर होता है, हमने डिराइव किया है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर? VI cos phi. E RMS I RMS cos phi, बट यहाँ पर RMS वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट पीक वैल्यू। एम्पलीट्यूड वर्ड है ना, एम्पलीट्यूड मतलब कौन सा वैल्यू होता है? पीक वैल्यू। So how to get E RMS in terms of E naught? अरे यस और नो? Yes. ये आंसर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज एवरेज पावर इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर। और फिर क्या फॉर्मूला है पावर फैक्टर कॉस पाई का? R by Z. R by Z, R by Z, R by Z, डन सर, डन सर, डन। टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। पावर फैक्टर इज 1 4, व्हाट इज cos phi का फॉर्मूला? R by Z। कैन आई से व्हेन R and Z become same, then it becomes 1 ना बेटा? बोलो। Yes, sir. So for a pure resistor or not, when Z becomes equal to R ना, when Z becomes equal to R मतलब कौन सा हो गया? Pure Resist. resistive circuit. So cos phi will become 1, so indirectly phi will become 0 ना? Phi will become 0 मतलब current and voltage both are in the same phase, and current and voltage are in the same phase मतलब क्या? Resistor ही तो है। हेलो, हेलो, yes or no, clear है ना? Yes, sir. We'll come to the fourth question also. I missed that question. Siddhi, are you ready? Okay. हाँ,
V is 100 sin 100t, I is 100 sin 100t plus pi by 3 मिली एम्पियर। कोई बता सकता है फेज डिफरेंस कितना है सिद्दीक? फेज डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? देखो इसके अंदर वाला 100t है, इसके अंदर वाला 100t प्लस पाई बाई 3 है, तो डिफरेंस कितना हुआ? पाई बाई 3। वेरी गुड। पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री? यार पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री होता है? हाँ 60 होता है। पावर डेसिपेटेड, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव। कितना ई नॉट है? ई नॉट 100 है। देखो आई नॉट कितना है? 100 नहीं है, 100 मिली एम्पियर है बेटा, ये मिली है, बाई 2 इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितनी होता है? हेलो, ये 10:4 हो गया। 10:-3 होता है। 10/2 इंटू कॉस 60 होता है हाफ, तो ये कितना हो गया? 4 2.5 वॉट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट। मुझे समझ में नहीं आता, इतना इजी इजी सवाल है तो भी। ओके, सिर्फ फॉर्मूला बैठ के याद करना है, ठीक है? वो जो 45 क्वेश्चंस में से जो 35 क्वेश्चंस है वो फॉर्मूला बेस्ड है। हम लोगों को फॉर्मूला बैठ के याद करना है, चुपचाप बैठो याद करो फॉर्मूला। बाकी 5 जो रह गए वो थियरी रह गए, डायमेंशन वाले, ये वेक्टर वो भी आ जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ दैट एंड के 45th में से वो जो 5 क्वेश्चन है उसके वजह से आप फिजिक्स को टफ मत समझो। गेटिंग इट और नॉट? भाई 45 क्वेश्चंस का ब्रेकअप ऐसे है कि 35 विल बी फार्मूला बेस्ड। तो फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला तो आना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। 5 थियरी रह गए, उसमें एंड के जो 5 है वो डिफिकल्ट होंगे, बिकॉज दे हैव टू डिसाइड द ऑल इंडिया रैंकिंग आल्सो ना भाई। तो आप वो 5 क्वेश्चन की वजह से पूरा फिजिक्स को टफ मत कर दो। जैसे हम लोगों का आदत क्या रहता है कि कुछ चैप्टर का कुछ पार्ट नहीं आता तो हम लोग कहते हैं पूरा चैप्टर टफ है, कहते हैं ना। ईएमआई में से सपोज आई डोंट नो सीआर सर्किट, तो मैं बोलूंगा यार कितना हार्ड चैप्टर है। ऐसे नहीं है, दैट पार्ट इज डिफिकल्ट, दैट यू नीड टू स्ट्रगल विद दैट पार्ट। होल चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट, you have to identify the parts which are there, the priorities which are there, वरना ऐसे तो सब टफ हो जाएगा भाई। Okay, the average power dissipated in a pure inductor में है, average power dissipated in an inductor। कोई बता सकता है फेज डिफरेंस कितना है इंडक्टर में? इंडक्टर में who leads and who lags? बेटा इंडक्टर में voltage leads current करंट lag बाय हाउ मेनी डिग्री, हाउ मेनी pi by डिग्री, 2 हाउ मेनी पाई बाय 2। पावर एवरेज का फॉर्मूला बोलो, ERMS IRMS बोलो सही है, ERMS। But how much is pi in case of inductor? तो एवरेज पावर कंजम्पशन कितना हो गया? 0 टोल्ड 0 रहेगा तो 0 रहेगा। कुछ लोग आंसर हाफ एल आई स्क्वायर मार्क करेंगे, दैट इज रॉन्ग। दैट इज एनर्जी स्टोर्ड। ए भाई, यहां पर वर्ड एवरेज पावर डेसिपेटेड की बात हो रही है। Getting it or not? And that is energy stored in case of DC. This is energy power dissipated in form of AC। जो हमने पुराना EMI किया था उसमें ऐसे था, और यहाँ पर DC था, ये DC था, और स्विच बंद करते थे तो याद है यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती थी, याद है कि नहीं? और यहाँ पर बात आ रही है AC की। AC में एवरेज पावर कंजम्पशन यहाँ पे 0 होगा। डोंट मिक्स बोथ ऑफ देम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8, फुल आंसर ऋषि बाल से। इन एन AC सर्किट पावर फैक्टर इज, पावर फैक्टर का फॉर्मूला बोलो। R/Z. व्हेन इज इट यूनिटी? व्हेन इज पावर फैक्टर Z is यूनिटी? equal to R. ओके, तो And क्या only आंसर है? resistor. When D. circuit contains only resistor, unity when the circuit is ideal resistance। ये हो गया आंसर। क्या था? बार बार वही चीज पढ़ा रहे हो आप तो।
Okay, we'll come to question number 9. मैं z का फॉर्मूला क्या है? z z z z z z is under root. हाँ R सुना square है क्या? plus XL minus XC the whole square. Yes. अच्छा, इस चीज को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस. That is inductive reactance versus capacitive reactance. दोनों को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा. Impedance of the circuit containing 3 ohm resistor. 3 स्क्वायर हो गया. And 4 ohm reactance. ये 4 स्क्वायर हो गया. कितना हो गया आंसर? 5 हो गया ना. ये z मिला 5. अच्छा, मांगता क्या आपको? cos phi. What is cos phi? R by z. What is R? 3. What is this z? 5.6. Good question. Okay, दो फॉर्मूला यूज हो रहा है. सही है क्या ना? What should I say? Yes or no? Who is going to tell me this answer? Okay, I'm not doing the sum. Good question. इधर ध्यान दो. बाल से. What is average power dissipation का फॉर्मूला? ERMS into IRMS into cos phi. मेरी बात सुनना ध्यान से. ERMS को ERMS लिख सकता हूँ? बिकॉज E है ना फॉर्मूला में. दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हेलो, है कि नहीं? Yes, sir. I को लिख सकता हूँ ERMS by Z and cos phi को लिख सकता हूँ R by Z. चलेगा क्या? हेलो. Yes, sir. So will become ERMS square into R by Z square. What is the formula for Z? Under root R square. अच्छा, अंडर रूट निकल जाएगा बिकॉज Z स्क्वायर है ना वो. प्लस एक्सएल. एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा L1 ओमेगा C the whole square. Are you there with me? Are you there with me? Yes or Yes, no? sir. सिंपल है. ये दो हुई है. ये आंसर है D. उनके पास कुछ है नहीं, खाली ये फॉर्मूला है, वही पूछते रहेंगे बार बार. Got it. We have 15 minutes in hand. Now listen to me. I'm doing transformers. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया पूरा. इंट्रोडक्टरी सबका कंप्लीट हो गया. चेक पॉइंट्स. लास्ट चेक पॉइंट बाकी है. दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर्स. ओके, इसके पहले चोक कॉइल क्या था? मैं क्लास टाइम बेटा चोक कॉइल. चोक कॉइल इज अ कॉइल. यार डोंट डू लाइक दिस. चोक कॉइल इज अ कॉइल व्हिच इज हैविंग हाई इंडक्टेंस एंड वेरी लो रेजिस्टेंस. हेलो, this is high inductance and very low resistance. याद है ना? XL is very much bigger than R. हेलो, और ट्यूबलाइट का बताया था, पट्टी वाला ट्यूबलाइट होता है. Yes or no, man? Yes, Same thing. Okay, fine. ये सब याद रखना. सेम क्वेश्चन. अभी ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, इधर आ जाओ. Transformers is a device which transforms high voltage to low voltage or low voltage to high voltage or high voltage to high current to low current or low current to high current. वो हम लोग पढ़ते हैं क्या. Okay, there are two types of transformer. One is step up, in which output voltage, secondary voltage is greater than primary voltage, and step down transformer, in which secondary voltage is lesser than primary voltage. Similarly, अगर voltage बढ़ेगा ना तो current कम हो जाएगा. Means what? Indirectly can I say secondary current is lesser than primary current, or secondary current is more than primary current. जो चीज हो रहा है voltage के साथ उसका opposite होगा current के साथ.
I'll tell you why. A step up or step down transformer. It will transform the voltage or the current. How does a transformer look like? Please pay attention. ट्रांसफॉर्मर में क्या करते हैं, एक मेटल का टुकड़ा लेते हैं, it is cut into sheets. ऐसे इसको शीट्स में काट देते हैं टू मिनिमाइज एडी करंट्स. To cut it into sheets and laminate it. Because वरना पूरा मेटल का टुकड़ा रहेगा तो उसमें एडी करंट्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे ना भाई. To minimize the loss of eddy currents, they are broken, they are made into sheets and riveted against one another. तो बीच में एक होल करता है यहाँ पर ऐसे पूरा सी थ्रू, एंड देन यहाँ पर हम लोग we will put coils over here. This will be the primary coil which is connected to an AC source. Very important, AC source. Transformer only works on AC. It does not work on DC. DC में तो कोई चेंज नहीं होता है, पूरा गेम हमारा चेंज परिवर्तन के ऊपर है, रिमेंबर ना. और यहाँ पर जो कॉइल टाई किया जाता है दैट इज सेकेंडरी कॉइल. ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स में दोनों में फर्क होगा. यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर होता है which will detect the current inside. ठीक. This was done in our board videos, please. Now see what happens. सुनो मेरी बात प्लीज. ये प्राइमरी कॉइल है, दिस इज सेकेंडरी. देखो यहां से सपोज करंट बढ़ेगा, करंट इन द प्राइमरी बढ़ेगा, current in the primary will increase, field in the primary will increase. तो यहां से अगर करंट बढ़ रहा है तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है. Can I say this magnetic field will be linked with this secondary coil because it is a ferromagnetic material. नाम सुना है आपने ferromagnetic material क्या होता है? हेलो? नो. केमिस्ट्री में सुना है ferromagnetic material, पैरा, डाया, फेरो. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो रहता है जो अपने अंदर फ्लक्स को रखता है, मतलब it will not leak the flux out. It will not allow the leakage of the flux. Its susceptibility is very high. Its permeability, its susceptibility is very high. मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ही रखेगा वो मेटल के अंदर. दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन. तो ये अपने अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड को घुमाता रहेगा ऐसे पूरा टर्न. तो कितना है से कैन आई से जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है उसके अंदर इधर भी इतना मैग्नेटिक फील्ड. तो करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, दिस फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, दिस फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. And whenever there is change in current, there will be change in field, there will be change in flux, there will be change in flux, and whenever there is change in flux, EMF is induced in the secondary coil. This phenomena को याद है हम लोग क्या बोलते थे? इसको बोलते थे म्यूचुअल इंडक्शन. Mutual induction. Are you understanding? The phenomena in which EMF is induced in the secondary coil by changing the current in the primary coil. The phenomena in which EMF is induced in the secondary coil by changing the current in the primary coil is called as mutual induction. We have done this before. अच्छा इसका भी कॉन्सेप्ट देखना, कॉन्सेप्ट देखो. मेरी बात सुनो. हेलो, मेरी बात सुनो. क्या इसे यहां पर ये प्राइमरी कॉइल है, एक कॉइल है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मतलब इनडायरेक्टली फ्लक्स जा रहा है, और ये सेकेंडरी कॉइल है, एक कॉइल है एक. कहना से ये ऐसे ही जाएगा.
Are you there with me? Can I say since ferromagnetic material hai, whatever is the flux in the primary, that much is the flux in the secondary link with each coil? Can I say flux linked per turn is same? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पर ट्रांसफार्मर काम करता है. तो फ्लक्स लिंक्ड पर टर्न सेम है. सपोज इधर 2 टर्न है और इधर 4 टर्न है. कैन यू टेल मी हुज फ्लक्स लिंकेज इज मोर? महक. or don't. सेकेंडरी का Secondary. बराबर है क्या? Yes. सेकेंडरी. फ्लक्स लिंक पर टर्न सेम है. पर टर्न सबका सेम है. पर टर्न दोनों का सेम है. बट जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उसका ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा. और पूरा जो गेम है यहाँ पे परिवर्तन पे बेस्ड है, चेंज पर बेस्ड है. मतलब पूरा जो गेम है वो d∅/dt पे बेस्ड है. हेलो, फाइव पे थोड़ी बेस्ड है, फाइव से थोड़ी कुछ होता है, परिवर्तन होना चाहिए ना भाई. पूरा जो ईएमएफ, बिकॉज ईएमएफ का फॉर्मूला इज व्हाट? d∅/dt. फॉर्मूला सुना है क्या? अच्छा, कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? E is equal to d∅/dt, but phi is, you remember, NAB. कोई बता सकता है सेकेंडरी और प्राइमरी में किसका फर्क है? नंबर ऑफ टर्न्स का. तो कैन आई रिमूव n आउटसाइड? कैन आई रिमूव n आउटसाइड? फ्लक्स में से n नंबर बाहर निकाल दिया. व्हाट इज दिस? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैं पीछे सिखाता हूँ अभी. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला? E is n d∅/dt. ये सब सम बाद में देखेंगे हम लोग. n d∅/dt. व्हाट इज n? This is what? Rate of change of flux per turn. और टर्न सबका सेम है. जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो कैन आई, इफ आई वांट टू राइट फॉर सेकेंडरी, कैन आई राइट दिस एज ns d∅/dt? This is flux link per turn, which is same for both. Can I write this for primary? Can I divide both of them? Can I say ES upon EP will be NS upon NP? Sir, why d∅/dt is cancelling? Because flux per turn change for both of them is the same. Because whatever is the flux link, each coil with the primary is each coil with the secondary is the same link. इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर मेरे को ईएमएफ सेकेंडरी ज्यादा मांगता है ना, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म ज्यादा करना पड़ेगा. तो इफ यू बिहाइंड वी हैव डन दिस स्टेप अप ट्रांसफार्मर. क्या होता था? जिसमें वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाज ग्रेटर देन वोल्टेज इन द प्राइमरी. सो इनडायरेक्टली कैन आई से एनएस शुड बी ग्रेटर देन एनपी. एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाज लेस देन वोल्टेज इन द प्राइमरी. सो कैन आई से एनएस वाज लेस देन एनपी. Are you understanding or not? नहीं समझा क्या? Yes. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's not over. It's not over. Can you tell me what does a transformer transfer? एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसफर होता है? पावर. In case of an ideal transformer, transformer transforms the voltage, but transfer किसको करता है? पावर को. आइडियल ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी इज 1. एफिशिएंसी इज 1 मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू पावर. सुना है ना, स्कूल में पढ़ा रहेगा शायद आप लोगों ने. There are no losses in a transformer, but practically there are a lot of losses in a transformer. Iron loss, copper loss, hysteresis loss, eddy current loss. नाम सुना है कि नहीं? Okay. Output power. What is formula for power?
VI. Can I say input मतलब primary, output मतलब secondary? So can I say VS upon VP? सुनो सुनो सुनो, VS upon VP किसके बराबर हो गया? VS upon VP. जल्दी जल्दी. IP upon I. मतलब V और I का क्या रिलेशन है? Inversely proportional. That means V is inverse to I. तो इसलिए तो मैंने पीछे कहा था अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अपने आप होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है. अगर वोल्टेज आप बढ़ा दिए तो करंट अपने आप कम होगा, बिकॉज पावर सेम रखना है. और अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा. Did you understand this thing? Did you understand this thing? Hi, बोलो. हेलो. Yes. वेरी गुड सर, वेरी गुड. अभी एक ही फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ. पूरे ट्रांसफॉर्मर के सम्स में एक ही फॉर्मूला चलता है, एक ही फॉर्मूला चलता है. ठीक है, देखते हैं हम लोग कौन सा फॉर्मूला. रिमेंबर दिस थिंग. एनवी ES upon EP, NS upon NP, VS upon VP. ये क्या लिखेंगे? IP upon, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. जिस रेशियो से ट्रांसफॉर्म होता है. गॉट इट? NV, ES upon EP, NS upon NP, VS upon VP, IP upon IS is called as transformation ratio. ये फॉर्मूला मैक्सिमम सम्स में काम लग जाएगा. और एक फॉर्मूला है एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आप लोगों ने सुना रहेगा. क्या है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट, दैट इज VSIS अपॉन PIP. ये कभी कभी यूज कर लेते हैं. ठीक है. Got it? This is the main formula. ठीक. Now I'm starting with the sums. Sir, sums. NV. चलो बाल से शुरू हो जाओ. What is increased in step down transformer? Current. Current is increased. And what is decreased? Voltage. Voltage. अरे सर बहुत इजी है, क्या क्या पूछते रहते हो. Okay, ठीक है. Question number 3. Look. Mehak. Transformer works on the principle of which induction? Mutual. अरे all the answers you have told, sir. Right? Mutual induction, man. दो है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. Quantity, ha. Arpita, quantity that remains unchanged in the transformer is Frequency. frequency सेम रहता है, बिकॉज वोल्टेज है ना, वो वेव है ना, एसी सोर्स है ना, एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा. वोल्टेज ट्रांसफर होगा, वोल्टेज चेंज होगा, करंट चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन द सेम. ये भी अच्छा वाला सुना. फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी चेंज थोड़ी होने वाला है. Next question. The ratio of secondary to the primary terms. So NS upon NP is given as what? 3:2. If the output power is P, the input power must be equal to क्या रहेगा? अरे क्या रहेगा? Same रहेगा. In an ideal transformer, input power and output power are the same. Yes or no? Hello? Yes, sir. Okay, the transformation ratio in step-up transformer. Step-up transformer, the transformation ratio क्या है? Anything, NV में से कोई भी पकड़ लो. So can I calculate NS upon NP? Step-up में कौन बड़ा होता है? Numerator के denominator? Numerator. So this answer will be done ना? Transformation ratio मतलब K मतलब NS upon NP या ES upon EP या VP upon VS upon VP. S upon P है भाई. हेलो, P upon S नहीं है. That is IP upon IS. Remember. Seventh question. Last question. Transformation, number of turns in the primary
500. Number of turns in the secondary 2000. Is the current in the primary 48. The current in the secondary. Sir, how to find so hard sum, sir? अरे बोलो. NS upon NP क्या होता है? by IS. अरे yes or no? Yes. NS upon NP 2000 by 500 is IP 48 by how much? कितना हो गया? 12 ampere. Yes or no? Yes. तो ये भी कर लो. Mehak, tell me, Mehak, the answer is what, sir? Why are they laminated? अभी मैंने बताया था. So that the loss will be minimum. Which loss? Which loss? Answer देखो ना यार. Eddy current. एडी करंट. बिकॉज एक पूरा मेटल का टुकड़ा रहेगा तो कितने ज्यादा एडी करंट आएगी. Yes. मगर उसको काट देंगे. एडी मतलब याद है ना, वर्लपूल. Yes. तो अगर एक मेटल का टुकड़ा रहेगा तो कैसे वर्लपूल की तरह करंट घूमता रहेगा. तो अगर काट देंगे तो उसका एडी लॉस कम हो जाएगा ना, वर्लपूल लॉस कम हो जाएगा. गेटिंग इट सर? वेरी गुड सर, वेरी गुड. ये सब थियरी पढ़ लेना, ठीक है. व्हाट इज कंस्ट्रक्टेड? जनरेटर इज कंस्ट्रक्टेड on the principle of ठीक. Thank you. We'll meet on Friday and we'll do taking it together. Taking it together में there are 135 sums. Same sums are there again and again. आपको डरने की जरूरत नहीं है. 2 से 3 टर्न में खत्म हो जाएगा. ठीक है. तो finished. चलो, thank you. Bye. Thank you, sir.